Hello there, everybody. Welcome back. Welcome back. Today we're going to be watching an open letter video on the surprising downfall of Goa. There was a downfall in Goa. See, my understanding from what I've read and what I've seen, Goa has always been like a pretty major like touristy hub type of place. So is the downfall like the lack of tourism? But I thought tourism kind of went up in India in the past couple years. I don't know. I guess we'll find out. Goa was once India's dream destination. Cheap stays, clean beaches, and carefree vibes, but today it's losing its charm fast. Okay. Tourists are ditching Goa for Vietnam, Bali, and Thailand, and the reasons are hard to ignore. Oh. Overpriced hotels, corrupted taxi mafias, filthy beaches, and a complex lack of regulation have turned Goa into a money trap. Oh, interesting. Okay. Well, before we read more of that, let's go ahead and watch the video, shall we? Link to the video will be in the description down below. Please, please, please go and take a look at it. Always support the original creator when it comes to watching reaction videos on my channel or on any channel. You always kind of want to make sure you're supporting the original creator. So yeah, the surprising downfall of Goa. Let's find out more. कोविड से पहले तक हर एक फ्रेंड ग्रुप का एक ड्रीम होता था कि एक दिन पूरा ग्रुप गोवा जाएगा। I mean, I think what is what is the stereotype of like Goa is like it's full of Russians on holiday, right? कितनी सारी फिल्में इसी गोवा ड्रीम पे बनी हुई है। 90 I've not seen any of these. What was that last one? कितनी सारी फिल्में इसी गोवा ड्रीम पे बनी। Go Goa Gone? Oh my god, what is this? Someone shot a shotgun through a torso? It's comedy, obviously. Very weird. I've not seen any of those. ट्रिप मिडिल क्लास और स्पेशली यंग क्राउड की एक बहुत बड़ी एस्पिरेशन रही है। चाहे एक्चुअल में ना जा पाए, लेकिन उनके प्लान तो सब लोग बनाते हैं। कितने लोगों की ड्रीम हनीमून डेस्टिनेशन भी गोवा होती थी, लेकिन आज वही लोग गोवा की जगह वियतनाम और थाईलैंड की ट्रिप प्लान कर रहे हैं। क्या हम लोग इतना ज्यादा कमाने लग गए हैं कि अब लोकल टूरिज्म छोड़ के लोग इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं? क्या बात असलियत में कुछ और? गोवा के अगेंस्ट आजकल जो सबसे बड़ा सेंटिमेंट बना हुआ है वो ये है। Overpricing is the wound inflicting pain on Goa tourism. Overpricing is the crux of the problem. An annual increase of 10 to 20% is understandable, but 100% is ridiculous, says Dave from the USA as he relaxes on the shore of Uganda. I came to spend 2 weeks in Goa with the intention of leaving for Kerala and Tamil Nadu later, but have got stuck here because I like the place just because I can afford it. Does not mean others can, he says, and adds, hotels, restaurants, and transport are expensive in Goa compared to other states in India, and that is why many are opting for other places. 100% increase? है कि गोवा What the काफी heck? अनअफोर्डेबल बन चुका है। फ्लाइट्स, होटल्स, टैक्सी सब कुछ महंगी। I don't think I'd go to Goa, honestly. Like this type of I'm just gonna be brutal honest and upfront. This type of thing doesn't interest me. Like I've been to many beaches. I've been to many resorts, beach resorts, stuff like that. It's not my thing. I've come to that realization. I'm old enough to now to know that eh, 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 I don't need it. हो चुकी है। लेकिन जो लोग गोवा की जगह थाईलैंड और वियतनाम जा रहे हैं, खर्चा तो वो लोग भी कर रहे हैं। तो इंडियन टूरिस्ट आखिर में चाहता क्या है? अफोर्डेबल डेस्टिनेशन, इंटरनेशनल एक्सपोजर या वैल्यू फॉर मनी? और इंडियन टूरिज्म जो हमेशा से ग्लोबली इतना फेमस था, कई नई-नई डेस्टिनेशन आने की वजह से इतना सफर कैसे करने लगा? आइए जरा डिटेल में देखते हैं। The downfall of Goa. Damn. ट्रैवल का असली मजा सिर्फ बीचेस और पार्टीज में नहीं होता। एक चीज और होती है जो आपके पूरे वाइब को डिफाइन करती है, आपका इंप्रेशन। और आपका पहला इंप्रेशन हमेशा आपके कपड़ों से नहीं बनता, आपकी खुशबू से भी बनता है। I just made in the video I just recorded before this, I was talking about how like cologne and stuff. I don't know. It's not that important. What you really want is to be clean and maintain your cleanliness. That's the more important thing. Other than cologne, like cologne and these like body sprays and stuff, they just mask the odor. But if you're clean underneath, that's what's more important. You want clean clothes, you want a clean body, you want a clean soul as well. अक्सर हम परफ्यूम को एक But yeah, the Man Company, black, the Man Company, interesting. The link to the Man Company is in his description if you want to take a look at it.
जेम ऑफ अ फाइंड एंड थैंक मी लेटर। गोवा में टूरिज्म 1960s में स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पर फॉरेनर्स गोवा के बीचेस और क्वाइट लाइफ के लिए वहां पर आने लगे थे। उस टाइम पर सरकार की टूरिज्म Interesting. पर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। जो फॉरेनर आते थे वो मोस्टली फिशरमैन के साथ ही रहते थे और फिशरमैन ही उनको खाना खिला देते थे, बोटिंग के लिए ले जाते थे। और फिर धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि काफी सारे फॉरेनर्स आने लगे हैं तो छोटे छोटे रेस्टोरेंट उन्होंने खोल लिए, अपने ही घर में एक्स्ट्रा रूम बना लिए। Interesting. और 80s तक गोवा में मोस्टली इसी तरह से टूरिज्म चल रहा था। 70s 80s में ही गोवा में हिप्पीज काफी ज्यादा आने लगे। उनके लिए गोवा एक Goddamn hippies. Always the hippies, man. Always the hippies. फेवरेट ऑफ बीट जगह बन गई। लोकल टूरिज्म था नहीं, गोवंस की पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, लेकिन नेचुरल ब्यूटी बहुत थी। बीचेस, ग्रीनरी, क्वाइट लाइफ। हिप्पीज गोवा आते थे और महीनों तक रुके रहते थे। इनकी पार्टीज बड़ी फेमस होती थी, कई में तो ड्रग्स वगैरह भी चलती थी। और That's ये सब लोकल्स को crazy. ज्यादा पसंद नहीं था, स्पेशली ड्रग्स और सेक्स के Oh, what? There were a bunch of confused, self absorbed idealists uninterested in local culture, history. That's crazy. You go to a foreign country and you don't want to learn about their history, their culture, their language. That's just ludicrous in my opinion. Like you should go to other countries to learn about their culture and history. Although the villagers disapproved of their skimpy clothes and casual manner, they housed them and took their money. Hippies should get credit for starting Goa's beach tourism, as sensational stories in Indian newspaper about half-naked foreigners dancing through the night acted like a magnet to hundreds of Indian hippie watchers who traveled to Goa for a closer look. That's weird. That's weird. That's weird. के अराउंड काफी That's ज्यादा weird. कंट्रोवर्सीज होती थी, लेकिन लोकल्स के लिए ये लोग एक इनकम का सोर्स बन चुके थे। प्लस जैसे जैसे ये कल्चर के बारे में लोगों को पता चलने लगा तो I इंडियन भी गोवा hate जाने लगे, hippies. ये देखने के लिए कि वहां ऐसा चल क्या रहा है। और उस I टाइम पे हमारे लोग despise फॉरेन ट्रैवल hippies. करने जाते नहीं थे, तो उनको वेस्टर्न कल्चर का जो फ्लेवर था वो गोवा में ही मिल जाता था। इसीलिए धीरे धीरे गोवा में टूरिज्म बढ़ता चला गया। होटल, कॉटेजेस, होम स्टे, रेस्टोरेंट, बार, पब सब कुछ बनते चले गए। बीच टूरिज्म भी बहुत पॉपुलर हो गया। अर्ली 2000 तक आप देखोगे तो गोवा में जितने टोटल टूरिस्ट आते थे उसमें 40% फॉरेनर होते थे। बाकी इंडियंस भी लोग यहाँ पे जाते थे, लेकिन ये लोग भी उसी लाइफस्टाइल के लिए वहां पे जाते थे कि वहां जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, पार्टी करेंगे, बीचेस पे बिकनी में फॉरेनर्स भाग रही होंगी। ये टिपिकल बॉलीवुड से इंस्पायर्ड एक इमेजिनेशन लेके लोग जाते थे। और रशियंस के अराउंड जो 6000 वाला जोक चलता है वो भी गोवा से ही शुरू हुआ था। इसीलिए गोवा मोस्टली यंग क्राउड को अट्रैक्ट करता था। फैमिली बच्चों के साथ गोवा कोई नहीं जाता था। इसीलिए गोवा पर कई सारी फिल्में बनी है। दिल चाहता है, हनीमून ट्रैवल्स, गो गोवा गॉन, गोलमाल सीरीज, ये सब कुछ गोवा में सेट है और इनमें गोवा की उसी लाइफस्टाइल को शो किया जाता है। लास्ट 10-12 सालों में अगर आप देखो गोवा में टूरिज्म काफी ज्यादा बढ़ा। इनफैक्ट आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट 10-12 सालों में ही जनरल इंडियंस काफी ट्रैवल करने लगे हैं, स्पेशली जो नॉर्थ इंडियंस हैं। अदरवाइज नॉर्थ इंडियंस लोग ट्रैवल करते थे तो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ट्रैवल करते थे। शिमला, मनाली, हरिद्वार, वृंदावन, मोस्टली इन्हीं सब जगह पे जाते थे। लेकिन क्योंकि अब लोगों की थोड़ी थोड़ी इनकम भी बढ़ रही है तो वो घूमने फिरने जाने लगे हैं। और पिछले 6-7 सालों में तो इंटरनेट की वजह से लोगों को पता भी चल गया है कि यहाँ जाया जा सकता है, तो ट्रैवलिंग में भी बहुत इंटरेस्ट आने लगा है। इसीलिए इतने सारे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर भी आ गए हैं जिनकी वजह से इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ा है और लोगों को पता भी चला है कि कहां कहां पर कैसे कैसे Interesting. पहुंचा जा I सकता है। have a few of these travel influencer videos in my reaction list. My reaction list is like 800 videos long, by the way. I apologize for not getting to your videos. The only downside on a lot of these on reacting to these like travel vloggers is a lot of them are partnered with media conglomerates like Thumb Media, and they are very copyright strike heavy, copyright claim heavy with their content. सकता है। पहले बुकिंग्स वगैरह काफी झंझट का काम होता था, लेकिन अब होटल, फ्लाइट सब कुछ ऑनलाइन बुक हो जाता है। इसलिए हमारा जो डोमेस्टिक टूरिज्म है वो काफी तेजी से बढ़ गया। और कोविड के बाद तो लोगों ने रिवेंज टूरिज्म शुरू कर दी। मतलब जो 2 साल Oh, हमारा जो डोमेस्टिक टूरिज्म है वो काफी तेजी से बढ़ गया। और कोविड के so total travel gross bookings. So it dropped in 2020. It started going way up in 2021, year over year change. But I mean, if you look at the actual like price, total gross bookings, I mean, it's got a lot. The year over year change is lower. Sure, it's not growing as much, but like the actual total amount is way higher than it was के before. बाद तो लोगों ने रिवेंज टूरिज्म शुरू कर दी। मतलब जो 2 साल तक अपने घर में Revenge कैद रहे थे tourism? उन्होंने कहा भैया आप तो 2 साल की पूरी कसर निकाल के खूब ट्रैवल कर Oh, लिए। लेकिन I see. They were like, oh man, we had to be in our house for. Oh no, we had to work from home. All right, we're gonna go out and just go to Goa. इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां पर लोग नई नई जगह डिस्कवर करके जा रहे हैं, गोवा में जो टूरिस्ट पहले जाते थे वो उतने नहीं पहुंच रहे हैं। कुछ महीनों पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी। ट्विटर पर एक यूजर ने गोवा के टूरिस्ट फिगर शेयर कर दिए Tourism in Goa is down in dumps. Foreign tourists have abandoned the state already. Look at 2019 versus 2023 numbers. Russian and Brits who used to visit annually have opted for Sri Lanka instead.
India tourists still visiting, but soon likely to ditch it, and word spreads about exploitation of tourists while there are so many cheaper comparable locations abroad. थे। इन फिगर्स को देखोगे तो बड़ा डिफरेंस दिखता है। इन फिगर्स के हिसाब से 2019 में गोवा में टोटल Oh, wow. Okay, yeah, that's a huge drop off. Wait a minute. Wait a minute. Oh my goodness. The even up till 2023, 1.5 comparatively before. That's a huge drop off. 8.5 लाख फॉरेन टूरिस्ट आए थे और 8 लाख डोमेस्टिक टूरिस्ट पहुंचे थे। कोविड के बाद डोमेस्टिक टूरिस्ट का जो फिगर था वो प्री पैंडेमिक लेवल पे चला गया, लेकिन जो फॉरेन टूरिस्ट थे वो काफी कम हो गए। इस पोस्ट पे कई सारे रिएक्शन आए, लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने लगे, जिसमें मोस्टली लोगों ने टैक्सी माफिया और एक्सपेंसिव होटल्स को गिरते हुए फिगर्स के लिए ब्लेम किया। I actually like that this is happening. We'll keep the ego of taxi mafia in check. Goa is not cheap. I found taxis to be super expensive in Goa. Goa has been costly for holidaying. Goa hotels can cost almost double. Luxury hotels in Goa are expensive. So, is the issue that these places are price adjusting to meet the wealth standard of foreign travelers, and that's disparaging the local India community from actually going there because of the price is just out of their way too high in comparison. किया था। गोवा गवर्नमेंट का भी इसमें रिएक्शन आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये फिगर्स एक चाइनीज Fake propaganda. Oh my God! Fake news. It's fake news. Fake propaganda against Goa tourism exposed, claimed minister. We have successfully exposed the propaganda by providing supporting figures on the arrival of tourists in the state. The numbers were earlier tabled on the floor of the assembly. गोवा के अगेंस्ट एक टारगेटेड कैंपेन है। ये फिगर्स डिस्प्यूटेड हो सकते हैं क्योंकि गोवा गवर्नमेंट के हिसाब से 2019 में डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट मिला के 8 लाख टूरिस्ट पहुंचे थे, लेकिन अगर खुद गोवा के लोकल सोर्सेज का डेटा देखो तो उनके हिसाब से 2019 में गोवा में 9.4 लाख फॉरेन टूरिस्ट आए थे, जबकि लास्ट ईयर ये रीसेंट फिगर देखोगे तो ये नंबर 4.6 लाख है। यानी इन फिगर्स के हिसाब It's से a huge drop off, absolutely massive drop लेवल off. को टच नहीं कर पाए। इनफैक्ट 50% गिर चुका है और इसका रीजन हमें ट्विटर से ही पता Huge. चलता है। इस कंट्रोवर्सी के टाइम पर ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने गोवा के अपने पर्सनल Goa gone. Cost of 4-star hotel per 2 night. Goa 8. Vietnam 2. Thailand 3. I mean, yeah. Wow, that's a huge price difference, huh? Wait a minute. Why do these two have the exact same wordings? Interesting. एक्सपीरियंस शेयर किए थे। लोगों की सबसे बड़ी शिकायत थी इनके हाई प्राइसेस। बहुत सारे लोगों ने गोवा, थाईलैंड और वियतनाम के कंपैरिजन में ट्वीट किया। जैसे ये देखो, गोवा में बीचेस के पास 3 स्टार होटल 5,000 रुपए पर डे में मिलता है, जबकि पटाया थाईलैंड में 3 स्टार होटल 3,000 में मिलता है। हनोई में 2,500 का पड़ता है, बल्कि वियतनाम में ही दानांग सिटी में तो 3 स्टार होटल 1,800 रुपए में मिल जाता है। इन्होंने भी गोवा, थाईलैंड और वियतनाम में कंपैरिजन किया। होटल के प्राइसेस चेक करो, गोवा में 5 स्टार होटल पर नाइट 15,000 का है, जबकि सिमिलर 5 स्टार होटल हनोई के अंदर सिर्फ 6,000 का और बैंकॉक में 7,000 का। बल्कि इस चीज को आप खुद भी चेक कर सकते हो। गोवा के रेडिसन होटल That's a pretty big difference. सिटी के रेडिसन होटल से आप कंपैरिजन करो, काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट रेडिसन का जो गोवा में 4 स्टार होटल है वो दानांग के 5 स्टार रेडिसन से भी ज्यादा महंगा पड़ता है। आज की डेट के करंट प्राइसेस आप खुद चेक कर सकते हो। गोवा में 4 स्टार और 3 स्टार प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। फ्लाइट्स की बात करें तो हॉलिडे I mean, they're just targeting the tourists, I guess. New York's as good as its jets. Or NY's? NY's? I don't know why I said New York. I mean, that came to my head. NY's. Oh, स्टार और 3 jeez. स्टार प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। फ्लाइट्स की बात करें तो हॉलिडे सीजन में तो दिल्ली से हनोई NY's? What is NY's here? I don't know. Planning to get out of the city of New Year. Oh, New Year Okay, New Year's. While you have to shell out more to fly to any destination if you book your tickets now, here's a silver lining for the eternal optimist. Those wanting to take a vacation in Goa could even consider flying to Thailand. Okay. And those keen on Kochi may instead pack their bags for Vietnam. With domestic airfares soaring high. So wait a minute, it's higher to travel to fly international inside of India than it is to fly to Goa? According to travel industry sources, a round trip to Goa costs $23,000 per person against Thailand, which costs $26,000. That's crazy. बैंकॉक और दुबई की फ्लाइट गोवा की कंपैरिजन में सस्ती Why is it पड़ती so है। और फ्लाइट्स expensive? और होटल ही तो ट्रिप के तो सबसे For, बड़े खर्चे होते हैं। why is it so expensive for domestic flight? तो लोगों का बजट तो प्लानिंग करते वक्त ही बिगड़ जाता है। अब आदमी दिमाग लगाता है ना कि अगर डोमेस्टिक ट्रैवल फॉरेन ट्रैवल से महंगा पड़ रहा है तो मैं फॉरेन ट्रैवल ना कर लूं। ये तो Man, the AI is getting crazy अब आदमी here, दिमाग huh? This is AI, by the way. You could hardly tell
honestly. But I mean, it's AI. लगाता है ना कि अगर डोमेस्टिक ट्रैवल फॉरेन ट्रैवल से महंगा पड़ रहा है तो मैं फॉरेन ट्रैवल ना कर लूं। ये तो सिर्फ फ्लाइट और होटल की बात हो गई, जो खर्चा आपने बुकिंग के टाइम किया। गोवा में लैंड करते ही सबसे बड़ा जो स्कैम होता है वो है वहां का That plane lands sideways. फ्लाइट और होटल की बात हो गई, जो खर्चा आपने बुकिंग के टाइम किया। गोवा में The plane landed लैंड करते sideways. सबसे बड़ा जो स्कैम होता है वो है वहां Huh. का टैक्सी माफिया। The गोवा taxi में ओला उबर चलती mafia. नहीं है, लोकल टैक्सीज हैं और अब सरकार ने भी कह दिया है कि अब ओला उबर यहाँ पे आ भी नहीं पाएंगी। कार रेंटल और लोकल कैब बुकिंग सर्विसेज ही आपके यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। अब होता क्या है कि गोवा के टैक्सी वाले छोटी छोटी डिस्टेंस के लिए जो मर्जी होती है वो चार्ज कर लेते हैं और कोई इनके साथ नहीं जाना चाहता है। यहाँ गोवा माइल्स नाम से एक टैक्सी सर्विस है, लेकिन ट्विटर पे आपको ऐसी कई स्टोरीज मिल जाएंगी जिसमें गोवा के लोकल टैक्सी ड्राइवर्स पैसेंजर्स को हैरेस करते हैं, उन्हें गोवा माइल्स की टैक्सी में नहीं बैठने देते हैं। ये वीडियो देखो, इन लेडी ने गोवा माइल्स से कैब बुक करी तो एक लोकल टैक्सी ड्राइवर आ गया, कहने लगा जो आपकी 300 की कैब बुक हुई है इसको कैंसिल करो, 1000 रुपए मुझे दो और मेरे साथ मेरी टैक्सी में चलो। हाँ, और हमारे हक के ऊपर में तुम नहीं बोल सकते, जब तुम्हारी गाड़ी हम अप्रूव नहीं कर सकते तो फिर आप कैसे बोल रहे हो? क्यों कैंसिल करेंगे? तुम्ही 300 ची गाड़ी 1000 रुपयाला बोलता। इन टूरिस्ट ने एक रेंटल कार बुक So करी थी, लेकिन weird. टैक्सी ड्राइवर्स का झुंड आया और उन्हें कार में बैठने ही नहीं दिया, उनकी चाबी छीन ली। Goa airport and their locals are not allowed us to take our car. Hey, कौन है भाई? कौन नहीं आने दे रहा कार? भैया चाबी कहाँ है? गाड़ी की चाबी ले ली ना उन्होंने? So they have taken the car key also. ये है गोवा का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। That's हम इंडियंस weird. हमेशा से ही काफी प्राइस सेंसिटिव लोग हैं, हम तो धनिया तक बार्गेनिंग करके लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी बात है, लेकिन ऐसी प्राइस सेंसिटिव कंट्री में आप इतनी लूट मचाओगे तो कौन गोवा आना चाहेगा? आप छुट्टी मनाने आए थे और आते ही आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो पहले ही मूड खराब हो जाएगा। इसके बाद स्कूटी रेंटल में एक नया स्कैम चालू हो गया है। जब आप स्कूटी वापस करते हो तो रेंटल वाले बोलेंगे कि आपने तो इसमें स्क्रैच मार दिया है और आपसे ज्यादा पैसे निकलवाने की कोशिश करने लगेंगे। कई रेंटल वाले पहले स्कूटी किसी और प्राइस में देते हैं, बाद में वीकेंड के प्राइस बढ़ा के ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। इसके अलावा बीचेस पर जो शैक ओनर्स हैं, जो पुलिस हैं, वो भी टूरिस्ट से काफी रूडली बिहेव करने लगती है। बीचेस गंदी पड़ी रहती है, स्ट्रे एनिमल होते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा नहीं है। Look at the wild dogs on the beach. Are they जिससे काफी wild rudely behave dogs? करने Hold लगती on. है। बीचेस गंदी पड़ी रहती है, स्ट्रे एनिमल And this one looks like it has a collar. होते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना He says stray animals, but wait a minute. These dogs have collars on them. Unless, is this AI? I don't think, this doesn't look like AI, but this at least these two dogs have collars on them. अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जो एक्सपीरियंस है वो काफी खराब हो जाता है। अब ये तो हो गई गोवा टूरिस्ट की साइड। अगर वहां के लोकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू सुने तो उनका कहना है कि नॉर्थ इंडियंस गोवा में आके नुएंसेस क्रिएट कर Northy tourists in Goa trying to enter a place post working hours. It's funny that in all such instances, the one abusive guy seems to be on phone trying to call someone for more manpower and support. Who are they calling? A tourist place? To every Indian visiting Goa, please keep your behavior in a cowshed before entering the state. Please act civil is all we ask. This is in North Goa and usual pattern now. करते हैं, शोर शराबा करते हैं, इसलिए उन्हें नॉर्थ ईस्ट ज्यादा पसंद नहीं आते, Okay. जो कि कुछ हद तक सही बात है। ये इमेज ऐसे ही नहीं बनी है, इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जिससे पता चलता है कि जो नॉर्दर्न इंडिया टूरिस्ट है उसमें जनरल सिविक सेंस की थोड़ी सी कमी होती है। ऊपर से बहुत सारे लोग ज्यादा स्पेंड भी नहीं करते हैं, बार्गेनिंग काफी करते हैं, ऊपर से शोर शराबा करेंगे, बियर की बोतल बीचेस पे छोड़ देंगे, होटल रूम में गंद मचा देंगे। गोवा में भी वही पंजाबी और हरियाणवी गाने चल रहे होते हैं, इसीलिए वहां के लोकल्स ओपनली बोलते हैं कि हमें नहीं चाहिए ऐसे टूरिस्ट। और क्योंकि फॉरेनर्स जो ज्यादा स्पेंड करते थे वो भी Whenever I go to some place, like if I'm renting a hotel or something, I usually leave it cleaner than than what I came upon it in. Like I make sure to go through and take all my trash out. I wipe down the counters and stuff like that. I don't know. It's like my OCD. नहीं आ रहे, इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन अब और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा गोवा में टूरिज्म का असर अब वहां के एनवायरनमेंट पे भी दिखने लगा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी बढ़ गई हैं, डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है और इन जनरल भी लोकल कल्चर खत्म होता जा रहा है। बहुत से बिजनेसेस जो पहले लोकल्स ओन करते थे अब उसमें आउटसाइडर्स घुस चुके हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि गोवा की बीचेस पर भी पंजाबी गाने सुनने को मिलते हैं, वहां पे वही पनीर टिक्का और नॉर्दर्न डिशेस मिलती हैं। लोकल फ्लेवर, लोकल कुजीन खत्म होता जा रहा है, जिससे गोवंस काफी परेशान हो चुके हैं। इसीलिए फिर लोकल्स जो है वो टूरिस्ट से अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, जिससे टूरिस्ट को वेलकमिंग माहौल नहीं लगता है और लोकल्स काफी रूड लगते हैं और कुछ अननेसेसरली रूड होते भी हैं। अब ये तो लार्जली डोमेस्टिक टूरिज्म की बात हो गई, लेकिन फॉरेनर्स गोवा में क्यों नहीं आ रहे हैं? कुछ बेसिक रीजन तो है, वहां के बीचेस साफ नहीं है, क्राउडेड हो गए हैं और गोवा इन जनरल काफी एक्सपेंसिव हो गया। लेकिन इसके अलावा कुछ रीजंस हैं जो पूरे इंडिया के लिए ट्रू हैं, जिसमें सबसे बड़ा रीजन है हाइजीन। हमारी सरकारों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी सिटीज काफी ज्यादा फिल्दी है और हमारे लोगों में बिल्कुल भी सिविक सेंस नहीं है। दूसरा, सोशल मीडिया की वजह से ऑनलाइन भी इतना कंटेंट अवेलेबल है जिससे इस इशू को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के शो किया जाता है। अनहाइजीनिक ठेले वालों की रील, स्लम्स के अराउंड काफी कंटेंट है जो वायरल होता है। बहुत बार तो बांग्लादेश का कंटेंट भी इंडिया के नाम से ही छाप दिया जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू सेफ्टी का भी है। पिछले कुछ सालों में कितने इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं जिसमें फॉरेनर्स के साथ कुछ I remember reading about this.
Spanish woman was allegedly gang raped in Dumka district of Jharkhand. assault हो गया है, ईव टीजिंग हो गई है, कैट कॉलिंग हो गई है, और इन सब चीजों की वजह से फॉरेनर्स इंडिया को अवॉइड करना शुरू कर रहे हैं और ये चीजें फिर सोशल मीडिया पर और ज्यादा एम्पलीफाई भी हो जाती है। इसीलिए जो फॉरेनर्स जो इंडिया की डाइवर्सिटी और कल्चर की वजह से घूमने आते थे वो अब साउथ ईस्ट एशिया में चले जाते हैं, फिर श्रीलंका पहुंच जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, बाली, ये जो गोवा के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, जो ऑलमोस्ट सेम या इवन कम प्राइसेस में गोवा से बेटर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। उनकी हॉस्पिटैलिटी हमसे कहीं ज्यादा बेटर है और सबसे बड़ी चीज है कि उनकी सिटीज हमसे काफी ज्यादा सेफ है और साफ भी है। स्ट्रीट फूड में भी हाइजीन मेंटेन होता है। यूट्यूब पे Huh? वियतनाम, थाईलैंड या श्रीलंका की किसी भी सिटी का वॉक अराउंड टूर देखोगे तो आपको जमीन आसमान का डिफरेंस दिखाई देगा और इसी वजह से अब इंडियंस भी गोवा की जगह ये डेस्टिनेशन को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि हमें पैसे खर्च करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उतनी वैल्यू मिलनी चाहिए। लोकल स्कैम भी इन कंट्रीज में कम होते हैं। हमारे यहाँ किसी भी जगह प्राइस का कोई स्टैंडर्ड तो रहता नहीं है। फॉरेनर देखते ही डबल ट्रिपल प्राइस कोट करने लगते हैं, बेगर्स पहुंच जाते हैं फोटो खिंचवाने के I mean, this sort of stuff happens in the other countries as well. I mean, it's known that wherever you go, where it's like a very tourist heavy area, there's going to be people that, you know, scam the tourists, that, you know, that charge more just because you're a tourist, that, you know, try to manipulate you and stuff like that. I mean, that's like commonplace, no matter, like, everywhere in the world. बार बार लोगों को परेशान करने लगते हैं। इसकी वजह से भी उन लोगों को सेफ नहीं लगता। अब ये तो बात हो गई प्रॉब्लम की, पर सोल्यूशन क्या है? मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें बेसिक चीजें फिगर आउट करनी पड़ेंगी, जैसे हाइजीन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड अच्छे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी अच्छी हो, डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाए। ये हमारी काफी सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ प्रॉब्लम है कि जो डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट रहती है वो अवेलेबल नहीं होती है। इसी वजह से जो लिमिटेड फ्लाइट होती है वो काफी ज्यादा महंगी मिलती है। दूसरी बात, हर सरकार को एक काम करना चाहिए कि टूरिस्ट प्लेसेस में जितने भी स्कैम चलते हैं उन्हें वो खत्म कर दे। आप थोड़े ज्यादा पैसे चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कैम ऐसी चीज है जो हर टूरिस्ट को हमेशा याद रहती है कि मैं उस जगह गया था तो मेरे साथ ऐसे स्कैम हो गया था। वो बंदा 4 लोगों को और बताएगा तो इससे काफी नाम खराब होता है। इन बेसिक स्टेप के बाद हमें ध्यान देना पड़ेगा अपनी पीआर पर। आपने कभी सोचा है कि दुबई इतनी फेमस सिटी है, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड सिटी है, इसके बावजूद उसे इतना प्रमोशन क्यों करना पड़ता है? शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर तक बनाया हुआ है। वो इसलिए I don't understand the appeal of Dubai, to be honest with you. I don't think I'd ever go. सोशल मीडिया का जमाना है। ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देख देख के ही लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं। हाल ही में आपने नोटिस किया होगा कि बाकू, अलमाटी, इन सब का नाम बड़ा चल गया है। हर कोई इन्फ्लुएंसर बाकू जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी पीआर इस तरह से करवाई जा रही है। वहां की जो टूरिज्म वाली मिनिस्ट्रीज होती हैं वो पैसे देके इन्फ्लुएंसर्स को बुलाती हैं ताकि उस तरह के व्लॉग बने और लोग टिकट बुक कर करके वहां पे जाएं। बाकू अजरबैजान की कैपिटल है और अलमाटी कजाकिस्तान की। 2-3 साल पहले तक आपने इनका नाम भी नहीं सुना होगा, बल्कि आज भी आप बता नहीं पाओगे कि ये देश वर्ल्ड मैप में पड़ते कहां पर है। लेकिन दोनों सिटीज टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन की लिस्ट में ऊपर से ऊपर बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट 2024 में अलमाटी के अंदर 5 लाख फॉरेन टूरिस्ट आए थे। हालांकि ये बात सच है कि ये बहुत सुंदर सिटीज हैं, लेकिन इतनी जल्दी इतनी पॉपुलर पीआर पुश के बिना ये नहीं हो सकती थी। लेकिन अगेन हमें सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम को फिक्स करना पड़ेगा, वरना पता चल रहा होगा कि पीआर से टूरिस्ट तो आ गए लेकिन एक्सपीरियंस वैसे का वैसा ही है। वैसे मोदी जी ने कुछ टाइम पहले उत्तराखंड को प्रमोट किया था, लक्षद्वीप भी गए थे, और भी ऐसी बहुत सारी जगह इंडिया में जो एक्सप्लोर नहीं हुई है। टूरिज्म से हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, बस कॉम्पिटिटिव होने की जरूरत है। बाकी मैन कंपनी ब्लैक का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। The Man Company. Interesting. All right. So he turned the video on its head there at the end and is like, "Hey, you know, you guys need to have more civic sense and don't make the beaches dirty," which I don't think is necessarily the driving point for why the tourists aren't coming. I think it's the cost. I honestly, there's just cheaper destinations, and I mean that's just the way it is in general. You know, not as many people have as much money. Even those that do get the luxury of traveling internationally, they are probably on a tighter budget, so they opt for the cheaper option. And if these, you know, if Vietnam, Thailand, and stuff, they, you know, are offering rates at, you know, 50% less than what they're offering in Goa, of course they're going to go to those cheaper places, right? And I think that's the driving point. I think it's more cost than anything else. But interesting. Very interesting. I don't think I would ever go to Goa for the beaches or resorts. That's just not my vibe. I would go to see some of, you know, like some of the other like cultural significant things in Goa, but I personally wouldn't go for like the beaches, the resorts, the nightclubs. That just doesn't interest me. Surprising downfall, expected downfall. Taxi mafia, hotel mafia, bar mafia, traffic police are the main reasons of the downfall of Goa. Yes, as a Goan, I confirm everything is true. These taxi mafias have destroyed, and I am also frustrated by them because of their activities. Being a regular tourist to Goa since the last 10 years, I can confirm the taxi mafia is killing Goa tourism. See, this is this taxi mafia. All right. Bro made so many videos about cleanliness and hygiene that he got sponsored by a deodorant brand. That is not, cologne is not deodorant.
please, 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 cologne does not get rid of the smell. Cologne masks it. It is not a deodorant brand. Cologne can actually make you smell worse if you already smell bad. Other vloggers have already promoting for the last few days. Yeah, perfume. He's trying to upgrade you perfume from deodorant. Vietnam, Thailand, Malaysia have 1,000 times better infra prices and public transport. Goa is dead. Wow. I visited Goa 3 times. Extremely unhygienic. Taxi mafias, hotel mafias, bar mafias, rude behavior of police are the main cause that will never want to visit Goa again. Dang. I booked a Mumbai to Goa flight for $2,500, and the cab from Goa airport to my hotel cost me $3,000. That's crazy. Taxi's new airplane. As a nation, we have deteriorated on multiple fronts: safety, cleanliness, hygiene, civic sense, fraud, and loot. The fall of Goa is the domestic tourist and the Delhi crowd. He is brand ambassador of India. Is unhygienic. किया जाता है अनहाइजीनिक ठेले Oh, this, yeah, this I've seen this video make the lines. Like, unfortunately, a lot of these like the filthier, unsanitary food stall videos, and I don't even know, like, is this guy actually Indian? Or is this like a Pakistani psyop? In general, this is a good thing. Locals got their wish for fewer tourists, although fewer foreigners as well, and Indians are able to travel to other countries on cheaper budgets. Goa is heavily overrated now. I went there last year, and it was just 6 hours of traffic. Only best thing in Goa was me talking and dancing in a party with my crush, who I love the most. Dude, I hope your crush becomes the one for you. Congratulations for upcoming future. Well, last year, crush. It's been a year, and he's still calling them their crush. So, unfortunately, nothing happened. The outlook is not looking very good. Listen, if you like somebody, just get up, say it, talk to them, say, hey, I like you. Hey, do you want to start dating? If they say no, that's it. You walk away. He's like, okay, well, that's fine. If you don't want to, that's okay. We'll just we'll go about our ways, right? But you just can't sit there and let this, like this desire, this crush, this feeling like fester inside of you, because it's just going to cause even more drama and problems in your life. Go to Andaman, beautiful place, and the Andaman and Nicobar Islands. I am a native Goan, and I'm truly sorry about the inconvenience that were caused during your travel, and I hope our does something about situation. This is where most of the frauds and cheating tours take place. Same old rotten topic, empty brain, lack of topics. Goa is a scam. Next will be Andaman Nicobar Islands. Goa and South, not good. Goa is brand ambassador for Bali tourism. All thanks to Taxi Mafia. Interesting. Interesting. I don't understand why Goa was hyped in the first place. Lean, beaches are dirty. Weather is like 40 degrees in winter. People are rude. No good infra. There was no reason for Goa to be highlighted on the map in the first place. Damn. Drink price is very low. I don't drink, so that doesn't interest me. Indians fucked Goa as a state. What the heck? Sold my property in Goa. Not a single regret. Locals believe Goa doesn't need a tourist for them to survive. The downfall started there itself. I mean, if it spent, 50 years as a tourist state, because the hippies started coming in the 60s and 70s? Yeah. There's also need to have quality tourists with good civic sense who don't cause pollution.
Goa, no. Vietnam, no. Thailand, no. Andaman and Nicobar Island, yes. Lakshadweep Island, yes. Gave up listening after the perfume. Just skip it, man. Just skip the cologne ad. Dirtiest beaches. The biggest enemy of Indian tourism is Indians itself. What is this guy talking about? All right. Well, interesting video. Link to the video will be in the description down below, so please go and take a look at it. With that, I'm going to go ahead and go. Take care. Goodbye.